Dear students, today we will discuss the most important segment of the molecular basis of inheritance, translation process in which the protein is synthesized. So, for translation process or synthesis of proteins, the raw materials required कौन दरकार ही थे. First is raw materials. One is DNA. DNA, the information comes from the DNA. For protein synthesis, the information comes from the DNA. DNA is the director for formation of protein. Second is mRNA. The information as codon formation of mRNA. Now that translates into the formation of protein. Next, third is enzymes. Enzymes, acetyl synthetase, amino acyl synthetase, enzyme is required. Next, ribosomes, which is called as the site of protein synthesis. It is a cell organelle, and magnesium ion, and then another some initiation factors such as IF1, IF2 and IF3 initiation factors. And next is tRNA, all of the raw materials which are involved in the formation process of translation. So now we'll discuss actually the process of translation. DNA, mRNA, protein. This is transcription, that is translation. So in stepwise we will discuss the process of translation. First step is activation of amino acid. So amino acid, 20 amino acids are present inside the body, in our body or cell. So amino acids are present in cytoplasm, but in the inactive form. But when the protein synthesis is required or protein synthesis is carried on, the amino acids becomes activated. So for activation of amino acid, what are necessary? One is ATP is necessary, kind of energy. This is energy source. Next necessary is enzymes. So first step is activation of amino acid. प्रथमे amino acid गुड़िक inactivated थिबे जेतेबेले DNA रो information आसीबो mRNA द्वारा आसीबो, mRNA रीड करिवो, पुन ट्रांसलेट करिवो, प्रोटीन सिंथेसिस रे फॉर्मेशन करिवो, सेही समय रे कोन हबो ना अमीनो एसिड गुडी को एक्टिवेट हेबे, इनएक्टिवेटेड थिबे एक्टिवेट हेबे. तो एक्टिवेशन अमीनो एसिड एक्टिवेशन पई निहात भाबे एनर्जी दरकार. तेन एनर्जी सोर्स होचे एटीपी एंड एंजाइम्स दरकार. सो द एंजाइम इज अमीनो acyl synthetase. Amino acyl synthetase enzyme. So amino acid, ATP
प्लस एंजाइम ये कौन करिवो ना अमीनो फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसाइल और दिस इज नथिंग बट activated amino acid. So amino acid, ATP, enzyme, amino acid synthesis enzyme, formation amino acid, that is activated amino acid. Activated amino acid. So amino acid, ATP और enzyme complex amino acid synthesize करिवो. amino acid means activated amino acid. तो अमीनो जिते सब अमीनो एसिड गुड़िक ये सेम प्रोसेस रे एक्टिवेटेड होता है, सेम प्रोसेस रे एक्टिवेटेड होता है, किंतु एक्सेप्ट मिथियोनाइन अमीनो एसिड. मिथियोनाइन अमीनो एसिड व्हिच इज द फर्स्ट कोडन जो अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो AUG फर्स्ट कोडन रो अमीनो एसिड the first कोडन को रीड करे जे अमीनो एसिड मिथियोनाइन मध्ये सेम प्रोसेस रे एक्टिवेटेड हुए, किंतु ये जतलो एक्टिवेट हुए ताको हम कहबा F-MET. कोन F-MET मींस फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन और से प्रोसेस इज सेम. ये सब अमीनो एसिड जो प्रकार एक्टिवेटेड है मिथियोनाइन मध्ये सेम प्रकार एक्टिवेटेड हो, किंतु जे तो फर्स्ट अमीनो एसिड तो स्पेशल नेम हो चार F-MET मींस फॉर्मुलेटेड मिथियोनाइन. नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ activated amino acid to tRNA. तापर कोन हबो ना ट्रांसफर हबो. एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हेगला, फॉर्मेशन हेगला. इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड थिला ATP एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम साहाय्य एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हेला. मिथियोनाइन किन तार प्रॉपर स्पेसिफिक नेम देला the F-MET due to first amino acid or first codon of the amino acid. So then next step is transfer of activated amino acid to tRNA means the transfer RNA. tRNA रो स्ट्रक्चर को हमें देखिबा जदी हम आगु तुमको पूर्व वीडियो रे स्ट्रक्चर tRNA रो स्ट्रक्चर तुमको कहितले 3 prime 5 prime. This is anticodon size, this is T loop, this is D loop. 3 prime end रे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अछि, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अछि. तो जेतरा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड गुडी को ए थी आसिकी जॉइंट हबो. दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट ऑफ activated amino acid गुड़िक एटी आसिकी बाइंड हबा. एक्टिवेटेड जते अमीनो एसिड आसीबो tRNA रे 3 प्राइम एंड रो OS सहित बाइंड हेक रहइबो. ए रहिला परे ये ट्रांसफर RNA ए एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पाखो को नबो. तेनु साको हम कहा जाय ट्रांसफर RNA. तो tRNA दिस एंजाइम same also amino acid tRNA activated synthetic enzyme. The activated amino acid is transferred to the active site of proteins at ribosome by the help of tRNA. Next step is actually protein synthesis steps. The real process or mechanism of protein synthesis. Next step is protein synthesis or mechanism, या को पुणी हमें सबस्टेज रे वर्णना करिया.
प्रथमे कौन होला अमीनो एसिड गुड़िक एक्टिवेटेड हो गले बाय द हेल्प ऑफ एटीपी से गोटे पॉइंट तुमको छाड़ी देछि मन रख एक्टिवेटेड अमीनो एसिड एटीपी प्लस एंजाइम is activated amino acid plus AMP plus phosphate. Activated amino acid ATP साहाय्य एंजाइम साहाय्य एक्टिवेटेड amino acid तरफ AMP amino adenosine monophosphate ये ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट आ दुटा फॉस्फेट रिलीज हो दुटा फॉस्फेट रिलीज हो जेतेबेले ये टीआरएनए सहित मिसिबो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मिसिबो सेतेबेले कोन होबो ना टीआरएनए मिसिला परे 3 प्राइम 5 प्राइम 8 एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मिसिला परे ए एएमपी आउ फॉस्फेट पुन थरे रिलीज हो तो केवल एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए सहित आसीकी एक्टिव साइट को आसीबो राइबोसोम साइट को आसीबो Next, the mechanism, proteins and mechanism of first step assembly of subunits of ribosome. Assembly of subunits of ribosome. Ribosome is the actual site of protein synthesis. Ribosome is a cell organelle. Ribosome consists of two subunits. One is smaller subunit, smaller unit, and larger unit. They are arranged in a coefficient manner. Ribosomes, this theta subunit actually जेतेबेले प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट हबो सेही समय रे ए सब यूनिट गुडको असेंबली है कि राइबोसोम फॉर्मेशन नचेत ता पूर्व जो प्रोटीन से होने ए सब यूनिट गुडको साइटोप्लाज्मा भितर स्कैटर्ड हेकि थिबे जेतेबेले प्रोटीन सिंथेसिस नीड हबो इनिशिएट हबो सेही समय रे ए सब यूनिट गुडको असेंबली हेबे एंड फॉर्म द राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल सो असेंबली ऑफ सब यूनिट्स मने कर नाउ डिस्कस द डायग्राम इज स्मॉलर यूनिट एक्चुअली एई भली डायग्राम न थाए राइबोसोम रो तमरो खाली कन्वेंस पे बुझिया पे मो ये करूची खाली लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट हम जानि से 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम सो 80s राइबोसोम रे 60s 40s 60s सब यूनिट स्मॉलर और लार्जर 80s रो 30s स्मॉलर यूनिट 50s लार्जर सब यूनिट तो मने कर स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट ए सब यूनिट गुडको जेतेबेले प्रोटीन सिंथेसिस आरंभ हबो बा मेकानिज्म आरंभ हबो से समय दीटा सब यूनिट यूनाइटेड बा असेंबली हेबे एंड फॉर्म दिस एक्चुअल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सेल ऑर्गेनिज्म राइबोसोम the smaller subunit has a site where the mRNA binds smaller this is smaller subunit this is larger subunit smaller subunit this side is side mRNA binding site mRNA binds at the smaller subunit very important mRNA binds with the smaller subunit and larger subunit are three sites one is A site B site and E site A site B site and E site